वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परमवीर प्रभु पद रेणुकू को मैं पहले से नहीं जानता था। मैं मंदिर में ही उनको मिला था जब मैंने मंदिर ज्वाइन किया था 2017 में। तब वो परमवीर प्रभु थे और उस समय से ही मैं उनको देखता था कि वो बहुत सिंसियर हैं, ज़्यादा बहुत पर्टिकुलर हैं अपनी चीज़ों को लेकर, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, साइलेंट ही रहते थे। जो उनका एक एक सर्कल था बस उन्हीं से ही ज़्यादा वो बात किया करते थे। फिर धीरे धीरे उनकी और मेरी बातचीत शुरू हुई जब उन्होंने महाराज से दीक्षा लेने के बारे में सोचा। तब वो मेरे से बहुत क्वेश्चन किया करते थे कि महाराज का शेड्यूल कैसे रहता है, महाराज इंडिया कब आते हैं, महाराज कैसे मैं अप्रोच कर सकता हूँ महाराज को। और वो बहुत सरेंडर थे शुरू से ही, महाराज को बहुत सरेंडर थे। महाराज को मेल लिखा करते थे और मुझसे पूछा करते थे कि मेल में मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, कितने दिनों में रिप्लाई आता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस किया करते थे। और जैसा कि बाकी डिवोटीज ने भी ज़रूर इस क्वालिटी को नोटिस किया होगा दैट ही इज़ काइंड ऑफ अ साइलेंट प्रीचर। और डिवोटीज़ को सर्व करना उन्हें बहुत पसंद था। जो भी लोग मंदिर आते थे उनको उनको उनसे बात करना, उनको सर्व करना उन्हें अच्छा लगता था। शायद इसलिए महाराज, मैं उनकी दीक्षा का लेक्चर भी देख रहा था तो शायद इसलिए महाराज ने उनको ये नाम भी दिया, पद रेणुकू, सर्वेंट ऑफ द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द डिवोटीज़। और वो अपनी साधना को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे, बहुत ही मृदुभाषी थे। और जब भी महाराज इंडिया आते थे, हमारे गुरु महाराज जब इंडिया आते थे तो हमारे लिए वो एक फेस्टिवल के जैसा ही होता था। और उसकी तैयारी हम लगभग 1 महीना पहले ही शुरू कर देते थे। और वो बहुत पर्टिकुलर थे, शायद उनको गेस्ट केयर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इसलिए हम जो भी महाराज को ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि महाराज वृंदावन या मायापुर जाते थे, दिल्ली इतना नहीं आते थे, तो हम सारी चीज़ें यहीं से लेके जाते थे। इवन नमक, ब्लैक पेपर, पानी का गिलास, प्रेस, चॉपिंग बोर्ड, नाइफ, मतलब कहने का मतलब है कि एक एक चीज़ जो भी महाराज को वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, पद रेणुकू यहीं से ही हम उसकी लिस्ट बनाते थे और पद रेणुकू उसको यहीं से ही लेके जाते थे। शायद वो इंश्योर करते या तो मैं लेकर आऊँ या वो खुद अपने मंदिर से लेकर आते थे। और साथ ही साथ जब वो महाराज की सेवा करते भी थे तो समहाउ मतलब उनका नेचर ऐसा था कि वो बैकग्राउंड में ही रहकर सेवा करना पसंद करते, बिल्कुल साइलेंटली महाराज के रूम में आते थे। जहाँ भी महाराज रुके होते थे वहाँ पे झाड़ू पोछा शुरू कर देते थे सुबह सुबह। डीटीज़ के लिए फूल रख देते थे। और एक सेवा जो उनको महाराज की करनी बहुत पसंद थी वो थी महाराज के कपड़े प्रेस करना। ऑल्दो महाराज कभी प्रेस किए हुए कपड़े कभी नहीं पहने। मुझे नहीं याद कि शायद ही किसी डिसाइपल ने महाराज के कभी कपड़े प्रेस किए होंगे। महाराज कभी भी प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनते थे। बट क्योंकि पद रेणुकू को ये सेवा बहुत पसंद थी, वो बहुत टाइम लगाते थे कपड़ों को प्रेस करने में, बहुत अच्छे से बहुत तरीके से प्रेस करते थे। सो महाराज ने जोकिंगली उनका नाम भी रख दिया था आयरन मैन। ही लव्स टू आयरन क्लॉथ्स। तो और सिर्फ उन्हीं के हाथ के प्रेस किए हुए कपड़े महाराज पहनते थे, वरना अदरवाइज़ आज तक मुझे तो नहीं याद शायद किसी ने कभी महाराज के लिए कपड़े प्रेस किए होंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि शायद मैं आखिरी व्यक्ति था जिन्होंने उनसे फ़ोन पे बात किया था उनके ऑपरेशन से पहले। तो उस समय मैंने ये चीज़ फील करी कि ही वॉज़ वेरी ब्रेव। उनकी बात में उनको कभी भी ऐसा कोई डर नहीं था। ही हैज़ दिस फीलिंग, उन्होंने मेरे को बोला भी कि जो है वो कृष्ण के हाथ में है, कृष्ण चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सो इस दिन मतलब मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट दिया। हम कभी साथ नहीं रह पाए। मैंने पंजाबी बाग ज्वाइन किया तो 6 महीने में फिर रोहिणी चला गया, वो पंजाबी बाग में थे। फिर मैं यहाँ आ गया पेरिस, तो कभी इतना ज़्यादा उनके साथ एसोसिएट करने का मौका नहीं मिला। उनके साथ कभी मैं किसी कैंप में नहीं गया। जितना भी होता था बस हम कोई साल में 15 दिन 20 दिन जो महाराज के साथ सेवा करते थे बस वही कर पाते थे। सो आई हैव दिस रिग्रेट इन माई हार्ट। तो मैं उनको ज़्यादा सर्व नहीं करता, उनसे एसोसिएट नहीं कर पाया। सो पर मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके लिए बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया मेरे जीवन में कि कैसे हमें महाराज की सेवा करने के लिए, अपने गुरु की सेवा करने के लिए बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए। तो परमवीर का बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna, everyone. Please accept my humble obeisances. All goes to Srila Prabhupada, all goes to Sri Guru and Gauranga. I will read my short glorification of
Father Renu Prabhu, because there are so many things and I would not like to get distracted, and I would just be more focused to share in short time. I remember my last interaction with Father Renu Prabhu before leaving India. He had undergone surgery, and I was quite distressed or not in a good mood to see him in this situation. But we can see we are not the controller. Nature reminds us all the time we are not the controller. We are just Anu. He was explaining how it went and everything about the surgery. Then we talked about our personal and spiritual topics. And as always, Father Renu Prabhu will always offer you something. Can I bring you some water? Can I bring some else for you? Would you like to eat something? Even he was in surgery, he was ready to, Prabhu, can I bring some water for you? What can I else bring for you? Then he always had some laddus from home, and he offered the laddus. And it's like, okay, whatever you offer, I will accept. Okay, so he offered me laddu. I just accepted one laddu. And he was so kind and so nice. It was like, you finished one, take one more. And you take one, and it's like, take one more. And at the end, though I wanted to take one, I ended up having many laddus. And after that, I remember our interaction in the same year in Janamashtami, where it was evening time. We both were fasting at that time. And we were talking about our realization and experiences that time. I remember because he had joined the temple that time, and I remember how different he felt, and his thing, he was totally changed. I could see in him, like he had a sense of very calmness. He was satisfied being among the devotees in the service of Srila Prabhupada. And that was his experiences about how everything is managed by Krishna, how Krishna takes care of everything, and how Krishna is planning for his devotees, and how he will make them progress in the devotional service. I think the goal of all of us in this devotional life is to, at the end of the life, we would like to be surrounded by devotees doing Harinam Sankirtan. Somebody brings some tulasi, somebody brings some Gangajal or something. And I think Father Renu Prabhu had all of them. And yes, we pray that Krishna and Sriji accept him in their service, a service that was so dear to him while he was among us. Hare Krishna. Hare Krishna, my name is Nitya Charan Das. I was so fortunate to meet His Grace Padre Renu Prabhu in Vrindavan 2023, and he was selflessly serving the devotees without interruption all the time. He inspired me very much with his humility and how he was always in a good mood. I always felt, although I known him very shortly, I always felt very close to him, and he was serving me like I was his brother. Thank you, dear Padre Renu. Hare Krishna. Hare Krishna, my name is Ankul Agarwal, and I am also associated with ISKCON Punjabi Bagh, and His Grace Padre Renu Prabhu came into Krishna consciousness in 2008. He is my senior, and in 2016 he joined as a brahmachari. Until his last breath, he was constantly serving in Prabhupada's mission. He is a dedicated book distributor, and I also got a chance to serve with him in many Rath Yatras in Punjabi Bagh, in ISKCON Rohini Rath Yatra, and in many other book distribution time, marathon time. So I really try to pray that even after giving up the body, he may get the shelter at the lotus feet of Srila Prabhupada and Krishna, and he continue his service.
Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, dear Padarenu Prabhuji. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. This is your aspiring servant, Rasikananda Das, from New Mayapur in France. We're very, very sorry to hear of the departure of Padarenu Prabhuji. Our deepest condolences go out to all the friends and family and all the devotees. I have known Padarenu Prabhuji for the last several years. I helped to organize his initiation on Zoom in late 2021, at which time our Guru Maharaj, His Holiness Janananda Goswami, commented, "I'm so fortunate to have this opportunity to serve such a wonderful soul. I feel like he's my master. I just want to serve him." So we were amazed to hear this comment from our Guru Maharaj, and we could only begin to realize how great a devotee Padarenu Prabhuji must be. A year later, I met Padarenu Prabhuji in India for the first time. He picked me up from the airport, arranged my accommodation in Punjabi Bagh, and he took me to Sri Vrindavan Dham the next morning, where we had a wonderful few days engaged in service. We were doing service in the Gaushala, making the ladus and the wheat preparations for the cows. And I was always impressed by his humility, his sincerity, his kindness, his dedication. One particular instance in the Krishna Balaram temple, we were there with a few devotees, and just speaking for myself, it's easy to get caught up in the social atmosphere, so many devotees, so many things happening. But Padarenu was sitting in the corner, his eyes closed, deep in meditation, and I will always remember that, how much absorbed he was in the holy name. So Prabhuji, I want to thank you so much for your association. I'll always try to remember you and take inspiration from your wonderful service attitude and your kindness. And once again, so sorry for the loss of all the devotees. Hare Krishna from Rasikananda.